Hello, dear students, it's me Shakil Khan. Students, in today's class, you will learn about present perfect continuous tense. So, if I talk about present perfect continuous tense, the present perfect continuous tense is also known as present perfect progressive tense. It shows that something started in the past and is continuing at the present time. स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम ऐसे कामों का ज़िक्र करते हैं जो कि माजी में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं, मीन्स के प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस टेंस का फॉर्मूला क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द फॉर्मूला ऑफ present continuous tense is subject plus has been slash have been plus verb ing plus object plus since slash for plus point of time slash period of time. Its identification in Urdu is if there is रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ at the end of the sentence with वक्त या मुद्दत we use present perfect progressive in English. उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वक्त या मुद्दत के साथ आए तो हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। Students, let's see how to make sentences by using the formula of present perfect continuous tense. The first sentence what I have is I have been learning English for last 6 months. मैं पिछले 6 माह से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। The masons have been erecting this building since month of March. मामार मार्च के महीने से ये इमारत तामीर कर रहे हैं। The one thing which is very important to remember, that is the use of since and for. How to use since and for? So remember that with period of time we always use for, and with the point of time we always use since. As I met first sentence, it was I have been learning English for last 6 months. Now here I was talking about the period of time. That's why I used for last 6 months. But in the second sentence I used since. It was the masons have been erecting this building since month of March. So here I used since because it was point of time. So you have to remember all the time that with the point of time we always use since, and with the period of time we always use for. याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। पहले जुमले में हमने बात की पीरियड ऑफ टाइम की, हमने फॉर यूज़ किया। मैं पिछले 6 माह से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर इस्तेमाल किया। दूसरे जुमले में मामार मार्च के महीने से ये इमारत तामीर कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम था, तो यहाँ पे हमने सिंस इस्तेमाल किया। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखिएगा, भूलिएगा मत। वी हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1900 AD. हम 1980 से लाहौर में रह रहे हैं। We have not been living in Lahore since 1900 AD. Have
we've been living in Lahore since 1980. He has been working since morning. वो सुबह से काम कर रहा है. He has not been working since morning. Has he been working since morning? Students, remember one thing, when we change the sentence as negative, we put only not between has been or have been. But when we change the sentence as interrogative, we just put has or have before the subject. As I made two sentences, we have been living in Lahore since 1980. We have not been living in Lahore since 1980. Have we been living in Lahore since 1980? And the second sentence, it was he has been walking since morning. When I change it into negative, I wrote he has not been working since morning. Has he been working since morning? So this is the way to make sentences as negative and interrogative. Ahmed has been teaching to students for 2 days. अहमद 2 दिन से तलबा को पढ़ा रहा है. You have been wasting your time for 1 year. आप 1 साल से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो. Azmat has been sleeping since yesterday night. अज़मत कल रात से सो रहा है. Father has been waiting for you for 2 hours. अब्बू 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं. Players have been doing practice of football for 2 weeks. खिलाड़ी 2 हफ्ते से फुटबॉल की मश्क कर रहे हैं. They have been learning their lesson since evening. वो शाम से अपना सबक याद कर रहे हैं. Students, it was all about present perfect continuous tense. I hope you enjoyed it and found it useful. Keep on learning English with Indus English. Let's see in the next video. Till then, God bless you. Bye bye.